Yes. So last lecture we have seen about the role hierarchies. Okay. So what we have done in the last lecture was like, let me go to this manage users and the users. So we have created, different roles into the organization. So every user of us is now having a particular designation, a particular role. Now, what interesting fact, what in the last lecture, what we discussed is like, okay, when any of the user creates a record, so what should ideally happen is that, whenever any one of this, whenever any one of the user creates a record, what should ideally happen should be like, this record should be visible to him and to the manager. Apart from these two persons, for example, if development user has created a record, and this record should ideally be visible to him because he is the owner. The second should be the manager, his manager. Apart from this, these people like who are the siblings and the person who is actually subordinate, these students should visible the record. They shouldn't have the access of the record. But then what we have seen in the last lecture is like development user also creates a record. That record was visible to everybody, apart from his and the manager. The manager, oh sorry, the CEO, the manager user and the testing user and the customer user, every one of them can access the record. So we shouldn't make this to be happen. So that is what we have seen in the last lecture. So how to achieve this record visibility is something called as record visibility. So first thing is first thing is like you should be very clear to this role hierarchy jo hota hai, assigning role to some of the user. Like if these are the users, then assigning the role CFO, CEO, CTO, something like that. So assigning a role does not provide you the role, this record visibility, first of all, because by default, the record is visible to every one of them, right? So how to achieve this? We are going to start with a new topic, and that is OWD. Now, OWD stands for Organization-Wide Defaults. See, this is really one of the most important topic, I tell you. In the security, actually, वैसे भी जितने भी topics हम cover कर रहे हैं ना, that are essentially important. उसमें भी आपका OWD is the most important topic I considered this to be in the security. So इसमें अभी कैसा था? OWD actually it consists of 9 different options. I'll show you. But this is the table. This is the right way to learn this. वैसे इसको डायरेक्ट इतनी आसानी से डिस्क्राइब नहीं होता ये. आई विल शो यू कि ये अगर आप ऑब्जेक्ट लेवल पे जाके देखो तो इट इज समथिंग व्हिच इज एक्चुअली वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. ओके, सो लेट मी शो यू फर्स्ट दैट. मैं वहां से दिखाता हूँ आपको ना. इफ यू वांटेड टू गो, दिस इज द नेविगेशन, सेटअप एंड एडमिनिस्ट्रेटर, सिक्योरिटी कंट्रोल एंड देन शेयरिंग सेटिंग्स. लेट मी फर्स्ट शो यू फ्रॉम देयर. फिर हम देखेंगे उसको कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं. तो वी विल गो टू द सेटअप एंड देन एडमिनिस्टर and then we'll expand the security controls, right? Under the security controls, you have something called as sharing settings. Okay, just click on this sharing settings. So the first thing over here is like organization-wide defaults. See, here is the list of every object, lead, account, contact, and everything. All of the standard object and your custom object. Okay. The custom object will be listed in the last. So see, loan, hiring manager, candidate, and a position, my custom object. Probably I created this. So anyway, so these are the list of every object. Now, what is the default setting? What is the default setting? Default OWD setting has been mentioned over here. For the lead, it's like public read write transfer. For the account and contract is public read only. Now see, if हमको कैसे पढ़ाया गया था, I'll tell you that, and then the way I'm going to teach you, उसको कैसे मैं differ करता हूँ, मैं समझाता हूँ आपको. For every object, if I go with the lead, see what are the different OWD options on this object has been listed out here. So on the lead object, there are 4 different OWD options. Lead could have OWD as private. Lead could have OWD as public read only, then public read write, and then public read write transfer. So that means on the lead object, there are 4 different options of OWDs available. Then on the account and the contract, there are 3. On the order, again, there are 4. On the contact, again, there are 4. On the assets, there are 4. Then opportunity, there are 3. On the cases, again, there are 4. On the campaign, again, there are 3. Right? तो इस वे से अगर पढ़ोगे तो कभी याद नहीं. This is not possible. तो इसका I'll show you what is the way to learn this. So first of all, what is OWD? Okay. So OWD is a kind of setting
OWD is a kind of setting which is applied on the object. This is a full form is organization wide defaults. Okay. Now I probably have one diagram for this. Let me try to search. Yeah. See this diagram. OWD is a kind of setting which is applicable on the objects. Let me show you that. So this is one of the diagram, if and it shows like, we have an object called as account, we have an object contact and the campaign and the cases and the position, right? So these all are the different objects. So the OWD option is actually something we are going to learn it this in detail. I'm just introducing the concept. Okay. So from the beginning and from very easy point of view, if I wanted to understand what at all is OWD, so I'll rather say that, OWD is a kind of setting which is applicable on the objects, and it differs between object to object. The first thing, like it could be, we could say that for the account object, we have a different set of OWD settings. For the contact object, we have a different set of OWD settings. For the campaign, we have a different set of OWD. For the cases, we could have a different set of OWD. So it's something, a kind of setting. OWD is a kind of setting which is applicable on objects, and it is like, every object could have same or a rather different types of OWD settings. Now, why at all? Why at all we said this? We are going to learn that. This is about the accessibility. This is all about the record access. Okay, if I wanted to access, see, we have these many users. Like, we have CEO, and then we have CFO, and then we have COO, CTO, Vice President. These all are the positions rather. And we, if I talk about the users, so we have training my user, and then manager user, testing, development. We all have these users. See, we have 5 different set of users. We have 5 users. Okay. Now all of them wanted to access these whole objects: account, contact, campaign, cases. Now, for example, okay, we have 5 users, and all of them wanted to access the objects. This user, manager, user, testing, development, they all wanted to access account, contact, campaign, whatever. Now, all of them wanted to access doesn't mean that all of them should have the same access. If I wanted to put some of the restriction that this user, manager user, or rather the customer user should have the access on the read only or read write, something like that, so then there comes the OWD. Then there comes the concept of OWD. तो in general अगर आपको समझना है कि OWD क्या है, तो जो बेसिक देखिए मैं क्या करूंगा, आई विल स्टार्ट इट फ्रॉम द बेसिक एंड देन वी विल अंडरस्टैंड, हम धीरे 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 करके उसके डीप में जाएंगे, एंड देयर विल बी वन पॉइंट कम जहां पे आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा. बट नाउ बिकॉज वी आर नाउ ऑन टू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस, तो मुझे अभी कैसे है ना कि आपको एकदम सिंपल कंसेप्ट से समझाना पड़ेगा. सो वही मैं कर रहा हूँ, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग राइट नाउ. कि सी, OWD is a kind of setting. First of all, OWD is what? OWD is a kind of setting which is applicable on objects. It is applied at object level. That means for every object, there is an OWD setting. For every object, there is an OWD. Account OWD is different. Contacts OWD is different. Campaigns OWD is different. Cases OWD. Every object have a different set of OWD options. What is the full form of OWD? It's organization-wide defaults. Okay. Now, what is the use of OWD? OWD kya hai? It's a kind of setting. What kind of setting? That is applicable on the objects. You please write it down, because this is something which this is a most repeated question in the interview also. They will ask you what is OWD. So in the same way, you could explain them. What we are, the way I'm explaining you right now, you could use the same way to explain them. You could say that, OWD, first of all, the full form, if I started from the full form of OWD, let me tell you that OWD, the full form is organization-wide defaults. Now, to understand what exactly OWD is, you could say that, see, OWD is a kind of setting which is applicable on individual objects. OWD is what? OWD is a kind of setting which is applicable on individual objects. That means for every object, for every object, like its account, its contact, its campaign, we have a different set of OWD. For every object, there's a different set of OWD. There's a different, and that is what I was showing you right now. That is what I was showing you right now. Okay. See, for every object,
There's a different set of OWD options, right? These all are the, let me cancel this so that we could come to this page. And here you could see for the lead, it's like, public read write transfer. For the account, it's a public read write. These are what? These are the OWD settings. We are going to change this. Don't worry. We are going to change and see what happens. Okay. To make this introduction, if someone asks you this in the interview, what is OWD? What you need to say at that point is like, the full form, always start with the full form. OWD, you need to say that, let me start with the full form. The OWD is organization wide defaults. And second thing is like OWD is a kind of setting which is applicable on objects. That means for every object, there's a different setting. There's a different set of setting for every object. So it could be like your account could have a different OWD setting, your contact could have different, your campaign could have different, your cases could have different, your positions could have different OWDs. Okay. Now please don't stop it. No, please don't stop your answer over here. Just only you, one more thing, one more point here you should you could explain. Rather, you should explain is like this OWD is to control the accessibility. What is this? The OWD is used to control the accessibility of the object, or rather the records of the object, to different users. The way this user access account record, the way this user access account record, the way testing user could access the account records in the account, and the development user and the customer user, it could be different. This person could have complete access. This could have only few access. This could have few access. This could have few. This could have few. How to decide all this thing? Okay, if we have 5 different users. 1 second. Okay, see. So what I was saying is like the point number 1 was the full form of OWD. Point number 2, OWD is a kind of setting for individual object. Now let's talk about the point number 3. The point number 3 is what is the use of OWD? The OWD is used to control the accessibility. The way a user could access the record of any object. I wanted that this person have a different kind of access, this have a different, this have a different, and this have a different. So the way the user access the record of any of the object, account में जो record है उसको कैसे access करने देना है, contact के record को किस अलग-अलग तरीके से access करने देना है, that is all thing we decide with the OWDs. So this is what the purpose of OWD. So probably the answer is clear with you. So, whenever they ask to explain, and this is going to be one of the question for sure, when you attempt this interviews in the mock also, they will ask you, okay, what is OWD? Start with the full form. Second, tell them that OWD is a kind of setting which is for the individual objects. That means for every different object. For every different object, we have a different set of OWDs. Okay, and then मैं इसको अभी और explain, और बढ़ाने वाला हूँ. अभी मैं 3 point है, there are 3 points which I could tell you with this diagram. और इसमें 1-2 points आगे मैं लगाने वाला हूँ अभी. So at least 3 point तो मेरे को यहीं से दिख जा रहे हैं ना. You could also see this. Start with the full form, and then this, and then the final thing. What is the purpose? The purpose of OWD is like how a person could access, how a user could access the records of any object. That is going to be controlled with the OWD. Okay, so this was all with this diagram. Now let's come back to the theory. See, if you try to learn this from here, it's really impossible. So when we were on to the training, तो हमको तो ऐसे ही पढ़ाया गया था. When when we used to have a discussion, जब रूम में बैठ के डिस्कशन करते थे, तो जब हम लोग जो लोग हमसे पहले की आगे की बैचेस में थे, तो the people they used to tell us कि यार तुमको OWD पढ़ाया जाएगा, और OWD is something which is really important to understand. और वो लोग हमसे कहते थे कि एडमिन की ट्रेनिंग पे या इंटरव्यूज में OWD काफी पूछा जाता है. तो एक तो ये है कि जब आपको ये टॉपिक शुरू हो तो आप इसको बहुत ध्यान से समझना. दूसरा, उन्होंने कहा था कि यार थोड़ा सा टफ भी है.
तो फिर ऐसा हुआ भी, मतलब हमको जिस तरह से पढ़ाया गया, जब ऐसे दिखाया गया और फिर बताया गया कि यू नीड टू लर्न फॉर कि फॉर एवरी ऑब्जेक्ट हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ OWD ऑप्शंस आर देयर। सो जैसे लीड के लिए अलग दिख रहा है, कॉन्टैक्ट के लिए अलग दिख रहा है, कैंपेन के लिए अलग दिख रहा है। सो इट्स रियली, इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि इसको कैसे याद करेंगे। तो फिर मैंने फिर थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाया, अपना तरीका निकाला कि देयर मस्ट बी सम वे वर्क अराउंड होना चाहिए। एंड देन उसके बाद फिर ये टेबल बनाया मैंने। सो आई एक एक करके मैंने देखा एक्चुअली। तो दिस इज समथिंग विच इज ट्रायल एंड टेस्टेड, सो यू डोंट नीड टू वरी, जस्ट आप इसको फॉलो करो, आपके लिए बहुत आसान जाएगा, डोंट वरी। द फर्स्ट थिंग विच व्हाट आई एनालाइज, काफी वक्त लगा मेरे को, शायद 2 दिन या 3 दिन मेहनत करनी पड़ी थी इसके पीछे। But then outcome was, this is a fabulous thing. This and I shared to them also. Which is that probably now they are also taking this, and I mean in their sessions probably. I don't know. Again, this is something which is a fabulous way to learn the OWD. I'm telling you this. Believe me. I mean, आप भी compare करोगे तो आप realize करोगे इसको. First of all, I came to know that there are only 9 options. जब मैं इसको पढ़ना स्टार्ट किया तो इट वाज रियली कि ये कितने ऑप्शंस होंगे। बट देन व्हेन जब एक एक ऑप्शन को मैं लिखना शुरू करा, लिख लिख के मैं इसको निकाला। सो आई केम टू नो दैट देयर आर ओनली 9 ऑप्शंस इन OWD। सिर्फ 9 ही ऑप्शंस है, ज्यादा नहीं। प्राइवेट, पब्लिक रीड ओनली, पब्लिक रीड राइट, एंड देन पब्लिक रीड राइट ट्रांसफर। इन प्राइवेट को अलग करता हूँ तो पब्लिक रीड ओनली, रीड, रीड के बाद में रीड राइट के बाद में रीड राइट ट्रांसफर, एंड देन पब्लिक फुल एक्सेस, then no access, view only and use, and finally controlled by the parents. So I came to know that altogether there are only 9 options, ज्यादा नहीं है। Then I started learning कि कौन सा ऑप्शन कौन सी ऑब्जेक्ट पे, फिर उसका टेबल बनाया मैंने, उसके बाद उसको समराइज किया। So I came to know about this, that private, public read only, and public read write. These 3 options, OWD में ये 3 options, private, public read only, and then public read write. These 3 options are available for all of the standard as well as custom object, except one object. उसके बारे में बाद में बात करते हैं, प्राइस बुक को छोड़ के। प्राइस बुक को छोड़ के I came to know that these 3 options, private, public read only, and then public read write. These 3 options are available for all standards. See, I make this, I have written this also. Okay, these 3 OWD options will, no, not will, are available. Are available for all of the standard as well as custom objects. Okay. तो आप किसी भी, अब देखो, now let's compare this statement कि हम प्राइवेट, पब्लिक रीड ओनली और पब्लिक रीड राइट को, I'll just make any random clicks. Okay, मैं लीड से स्टार्ट करता हूँ। प्राइवेट, public read only, public read write. I could see that these 3 options are available in the lead. Private, public read only, public read write. Okay. Private, public read only, public read write. Just make any random click. Private, public read only, public read write. ठीक है। क्या प्राइस बुक को छोड़ के, बिकॉज अगर मैं प्राइस बुक में जाता हूँ, देखो आप यहाँ पे नहीं है, तो उसको छोड़ के, ना, और वो मैंने मेंशन किया भी है, उसको छोड़ के जस्ट मेक एनी रैंडम क्लिक। प्राइवेट, पब्लिक रीड ओनली, पब्लिक रीड राइट। थोड़ा सा नीचे चलते हैं। प्राइवेट, पब्लिक रीड ओनली, पब्लिक राइट। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। प्राइवेट, पब्लिक रीड ओनली, पब्लिक रीड राइट। ठीक है, जस्ट मेक एनी रैंडम क्लिक, नो प्रॉब्लम इन दिस। दिस इज समथिंग व्हिच इज ट्रायल एंड टेस्टेड। ठीक है, उसके बाद में चलो, अभी ये तो स्टैंडर्ड हो गया, कुछ कस्टम ऑब्जेक्ट पे चलते हैं। जैसे दीज ऑल आर आवर कस्टम ऑब्जेक्ट, ऑथर, बुक, ये सारे अपने कस्टम ऑब्जेक्ट हैं। प्राइवेट, पब्लिक रीड ओनली, पब्लिक रीड राइट। हायरिंग मैनेजर पे चलते हैं। प्राइवेट, पब्लिक रीड ओनली, पब्लिक रीड, माय कस्टम, प्राइवेट, पब्लिक। तो एवरीवेयर, सी नाउ इफ यू अंडरस्टैंड दिस कि these 3 options, private, public read only, public read write, these 3 options are available for every standard and every custom object except one object, and that is price book. ठीक है, these 3 options are not available for the price book. Okay, चलो उसके बाद चौथा ऑप्शन, the 4th OWD option is public read write. read write हो चुका था, public read write transfer. ठीक है, एक additional. Now this OWD option is available only for the 2 objects, and that is lead and case. Apart from lead and case, you don't have, transfer option is not available to any other option. Let me show that. So if I go to this lead, the lead is first. Here, see, you see this option, public read write, read as well as write as well as transfer. This option is only available for एक तो lead and the second is case, only the case.
Otherwise, you could see with any other, you don't find this. You won't find this. Now, calendar is something which comes under the activities. Okay, so calendar is something which comes under the activities. So activities mein hai. So that is why don't worry about this. So apart from these two, apart from these two, एक तो आपका case और दूसरा lead, you don't find this option anywhere else. Okay, that's what the second thing. Now, public full access. This option is only available with the campaigns. This option is only available with the campaigns. Go to campaign, here only you see this option, full access. Apart from this, there is no other object who have this OWD option, full access, public full access. So it is available only for the campaign. Now see, price book doesn't have these three options: private, public, read only, and public read write. The private, price book does not have these three options, but then price book have these three: no access, view only, and use. And by the way, these three options are only available for the price book. तो ये आप जैसे हम लोग जब पढ़ाई करते थे, आपको याद होगा बचपन में भी, इवन काफी छोटे में भी जब हम पोएम्स याद करते थे, वी यूज्ड टू स्टार्ट विद द राइमिंग वर्ड्स. आपको याद होगा. व्हाई? बिकॉज आवर माइंड इज ट्रेन इन सम अ वे दैट वी फाइंड इट वेरी इजी टू लर्न द राइमिंग वर्ड्स. Hatchback, something like that, bat, cat. So we are, from the beginning itself, we have been trained in a way that if something is coming under the rhyming, it's easy to understand. That is why even the small kids, they are able to learn the poems. Why? Because poem have this ending word wala jo word rehta hai, they used to keep it common. Why? Because it's something comes into the rhyming, and the kid can learn this very easily. So if you understand that rhyming over, if you find out that rhyming over here also, but in a different way, that these three are the options which are not available for the price book, but then there are three options which are only available for the price book. So you could find some of the symmetry in between. बाकी आप कैसे याद करते हो ना, everybody have its own style of learning. I could only say you what was my style of learning, because मैं अपना ही बता सकता हूँ ना, but everyone of do have a different way to learn the things. And the control by the parent, these are available for every child objects, those who are into the relationship. Control by the parent, the campaign member, campaign member, मैंने आपको पढ़ाया था एक जगह पे, आप जाके रिवाइज करना. Default junction objects में से I told you that there is an object, campaign member is a junction object. It's a junction object for the campaign. So campaign is the parent, this one is a child object. If you see this option, controlled by the parent, controlled by the campaign. See, campaign is what? Campaign is the parent member for this. So this definitely indicate that this one is a child. There must be some parent. Order, okay, contact. These all are the child objects. These all are the assets. These are the child object. So in the child object, you will see this option, controlled by the parent. Whoever object is in the relationship, and if it is a child object, there must be this option. So this is only for the what? These are only for the child objects. So if you learn in this way, if you learn by using this table, OWD will not be an issue for you. First thing is like, अब चलो हम start करते हैं what we have learned so far with the OWD. If I start with this. Now, if I ask you this as a question in the interview, what is OWD? Can you describe me that? How will you start your answer now? The first thing what you will tell me is like, the first point you will going to tell me is the full form of OWD. You will start by saying that, let me start from the full form of OWD. So OWD is organization-wide defaults. Okay. Second point, what I'm expecting from you is like, you tell me what is OWD. You will say that OWD is a kind of setting which is applicable for individual objects. For every object, there is an OWD setting. Second thing. Third, I wanted you to explain me that OWD is used to provide, or rather control, the accessibility. If account is having, 15 records, 15,000 records, the way these 5% could access the record is going to be different. The way the system administrator could access the record, this manager user, testing user, development user, customer user, the way this person is going to access the record is going to be different. And who is going to decide this? कि कौन कैसा access करेगा? That is something we are going to decide with the OWD. So what is the use? So OWD is used to control, or rather provide, जो भी आप बोलना चाहो, the accessibility of any record.
of any object to the users, to the different users. This was the third thing, third point you could say. Point number 4, I wanted you, and the most important thing. Now tell them that there are 9 different OWD options. There are 9 different OWD options. Now start describe. और ये टेबल याद होना पूरा. This is something, मैं लाइफ में अभी इतने लाइफ बोल रहा हूँ, इतना ड्यूरेशन में पहली बार मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये मेरे को याद होना चाहिए, एनी हाउ बाई हार्ट. इसमें आप चाहे कैसे भी लिख के याद करो, चाहे कैसे भी याद करो. दिस इज समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. देखो, शुरुआत से आज तक मैंने कभी नहीं बोला कि ये होना मतलब, लेकिन हाँ आज कह रहा हूँ, बिकॉज समथिंग, दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी एसेंशियल टू नो. और ये कोई ऐसी चीज है कि जिसको मैं नींद से उठा के आपसे पूछूं कि मुझे बताओ व्हाट इज प्राइवेट, तो आप बोलोगे प्राइवेट पब्लिक रीड ओनली, these 3 ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर एवरी स्टैंडर्ड कस्टम एक्सेप्ट दिस प्राइस बुक. तो ये इस हद तक याद होना चाहिए. तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस, नाउ यू कुड से कि हाँ मैंने आपको OWD के बारे में काफी कुछ बता दिया. ठीक है, तो ये है बेसिकली OWD, ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट्स. ठीक है, आइए अब इसको स्टार्ट करते हैं. So I'm going to start with the first option, that is private. Now what happens when you make OWD as private for any of the object? Because these 3 options are available for every standard and custom. Okay, so let me make these changes into the account only. Account object में change करता हूँ. ठीक है, उसके पहले मैं एक चीज और रिवाइज करना चाहूंगा. बिफोर आई डू दिस, मैं एक बार फिर से आपको वही सेम चीज दिखाना चाहता हूँ. The problem that we have faced in the last lecture, you see, I go to the development users login. In the development users login, I'm into this user development. See, I created one of the record inside the account object with the name development user record number 1. And let me log out from here. Now what we have seen is that, okay, chalo, development user ne ek record banaya which was visible to him, of course. Let's first check with the manager. Who's the manager? This training my Salesforce batch user is the manager. So I'm going to the accounts once again, and I could see the development user record number 1 is visible over here. This person, this system admin, the manager, is having the access on this record. Who is the owner? He is not the owner. See, he is like training batch user, but he is not the owner. Then who is the owner of this? Owner is actually user development. Still this person has access. Okay, और ये होना भी चाहिए because he is the manager, he should have the access. ठीक है. Then after this, after this, let's try to check it with the others users also. So apart from the development, apart from this training user, we have a user customer. So let me try to log in into the customer users, and here I go and I see that I also have this customer user also have the access on this record, which ideally should not happen. So how to control that? That is what we are going to learn. And then manager user, let me go with the manager and this manager user, and I go to the account. The manager user also have the access, and let me log out. And the final is like who's the next? Testing user. So testing users, so I check with the testing user. Testing user, if I go to the account, testing user also have the access. So that is what I was describing. कि देखो ये एक problem है. Like every one of them have the access of everybody record, and this is same with the case of everyone. This was like a development user ने कुछ record create किया है, तो वो बाकियों को दिख रहा है. This should be, this is going to be happen if even customer user creates a record. तब भी यही problem आने वाला है. Well, customer will create the record. It is accessible to him. It is also visible to this user because he's the manager. Apart from these 2 person, development manager testing will also have this record. Manager creates something, it will be accessible to the manager and to the training batch user. But apart from these 2 person, the record what he create, he's going to be visible. This record is going to be visible to testing and the development and the customer. So if you wanted to control this accessibility, you don't want this to be, or rather you wanted to restrict this. So how to put that restriction? How to put that restriction? If, for example, if the development user creates a record, the record should be visible to him and to his manager. Apart from these 2 person, nobody else should have the access. और जो कि अभी है, that is why I taken you back and I demonstrated it once again. ये last हुआ था अपना Friday के दिन. But probably अगर आप में से कोई absent था या भूल गया था, इसलिए मैं ये दिखाना चाहता था फिर से कि देखो,
लास्ट लेक्चर हमने डेवलपमेंट यूजर से एक रिकॉर्ड क्रिएट किया, और अभी आपने देखा कि द रिकॉर्ड विच डेवलपमेंट यूजर क्रिएटेड इज एक्सेसिबल टू एवरीबॉडी, जो कि नहीं होना चाहिए। एक आइडियल सिनेरियो में, एक आइडियल सिनेरियो एक रोल हायरार्की के हिसाब से होना तो ये चाहिए कि इफ दिस पर्सन क्रिएट्स अ रिकॉर्ड, एनी वन ऑफ देम, मैनेजर, टेस्टिंग, डेवलपमेंट, कस्टमर में से कोई भी अगर रिकॉर्ड बनाता है तो इट शुड बी विजिबल टू हिम पहला, एंड टू हिज मैनेजर. Now, apart from these two people, apart from these two people, this record shouldn't be visible to the manager, shouldn't be visible to testing, shouldn't be visible to the, because these two are subordinates and sorry, these are siblings and this is subordinate. ना तो वो subordinates को दिखना चाहिए, siblings को सॉरी, और ना ही वो subordinates को दिखना चाहिए. आइडियली होना तो ऐसा चाहिए कि एक तो जो रिकॉर्ड का ओनर है उसको नजर आए और दूसरा उसके मैनेजर को नजर आए. तो हाउ टू पुट दैट रिस्ट्रिक्शन, इसको कैसे अचीव करना, जो कि रोल हायरार्की से अचीव नहीं होता है, ऑफ कोर्स रोल हायरार्की से अचीव नहीं होता है, तो वो कैसे अचीव करना, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न राइट नाउ. ठीक है, आप ध्यान से समझो आप लोग सभी लोग. ठीक है, ठीक है, हो जाएगा. दिव्या, यू हैव एट 7:15 राइट, यू हैव द बैच एट 7:15. यस, फाइन, हो जाएगा, हो जाएगा. ठीक है, हाँ ठीक है. देखिए, तो सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया आपने. What you have identified, this was the problem. कि ये यूजर का बनाया हुआ रिकॉर्ड इज विजिबल टू एवरीबॉडी, which shouldn't be happen. कौन से ऑब्जेक्ट में इसने रिकॉर्ड बनाया था? If I once again log in and see, he has created this record into the account object. account object के अंदर ये रिकॉर्ड बनाया था इसने. ठीक है, तो मैं अभी OWD पे जा रहा हूँ. अब मैं अच्छा, OWD कैसे होती है, अब फिर से रिवाइज करता हूँ. OWD किस पे लगती है? ऑब्जेक्ट वाइज. तो अकाउंट पे अगर मैं OWD चेंज करूंगा कुछ, अगर इफ आई डू एनी चेंजेस इनसाइड द OWD ऑफ अकाउंट, इट विल बी एप्लीकेबल ओनली ऑन अकाउंट. ऐसा नहीं है कि मैं OWD पे कुछ छेड़खानी कर रहा हूं तो वो सब पे लागू जाएगी, नहीं. इसलिए मैंने यहां से स्टार्ट किया. सबसे पहले मैंने शुरुआत ही यहीं से की आज आपकी, कि OWD इज समथिंग विच इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द ऑब्जेक्ट. तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की OWD पे चेंजेस कर रहा हूं, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट दीज ऑब्जेक्ट, इन कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे मैं जो करूंगा वो ऑब्जेक्ट लेवल रहेगा, ऑब्जेक्ट लेवल रहेगा. ठीक है, ध्यान से समझो. चलो, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज लाइक, अभी ये देख लिया आपने, ये प्रॉब्लम देख लिया. लेट मी लॉग आउट फ्रॉम हियर. चलिए, अब हम चलते हैं OWD ऑप्शंस पे. तो आप फिर से सेटअप पे जाएं, एडमिन सेटअप पे जाएं. इसके जाने के बाद में यू नीड टू एक्सपैंड दिस सिक्योरिटी कंट्रोल्स. यहाँ पे आप शेयरिंग सेटिंग्स में जाएं. ठीक है, यू हैव द नेविगेशंस विद यू इन द थ्योरी, एवरीथिंग हैज रिटन, सो डोंट वरी. वैसे भी ये वीडियो में तो रिकॉर्ड हो ही रहा है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं. तो शेयरिंग सेटिंग्स में जाइए, and we wanted to make certain changes into the account. Presently, I could see the account is having this access: public read write, public read write. Presently, the OWD setting for account is public read write, and I wanted to make certain changes over here. I wanted to edit this, so that's why I'm pressing this button, edit. Okay, now the account is having public read write. Present the what is the default OWD is public read write. I am making one changes over here, and that is I'm making it private. I am making this private. Okay, it will first prompt me that you are making this private. So there are two more objects: opportunity and opportunity access, and one more case. तो जैसे ही आप अकाउंट ऑब्जेक्ट पे OWD प्राइवेट करते हो, साथ ही साथ when you make changes for the account object, ये अभी आप देखने वाले हो, अपॉर्चुनिटी का भी प्राइवेट हो जाता है और केस का भी प्राइवेट हो जाता है बाय डिफॉल्ट. ठीक है, तो वही ये प्रॉम्प्ट कर रहा है, बस और कुछ नहीं. डोंट वरी अबाउट दिस, हमको इस वक्त सिर्फ अकाउंट से ही काम है. सो यहाँ पे अभी अपॉर्चुनिटी का नाम आ रहा है. अभी जैसे ही मैं प्रेस करूंगा, एक और डायलॉग बॉक्स ऐसे ही ओपन होगा वार्निंग का, एंड इट विल से मी कि आप अकाउंट के, ये कह रहा है कि अकाउंट अपॉर्चुनिटी का एक्सेस भी प्राइवेट हो जाएगा. इसके बाद जो डायलॉग बॉक्स आएगा वो कहेगा कि केस का भी प्राइवेट हो जाएगा. देखिए आप, दूसरा आया, दूसरा क्या बोल रहा है कि केस का भी एक्सेस जो है वो भी प्राइवेट हो जाएगा. तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस. ठीक है ना, अकाउंट ये एक्चुअली क्या है कि अकाउंट के साथ अपॉर्चुनिटी और केसेस दोनों रिलेटेड है, इसलिए. सो ओके करो आप. ठीक है, तो अभी देखिए आप, ये भी प्राइवेट हो चुका है, अपॉर्चुनिटी भी प्राइवेट हो गया, एंड केसेस भी. लेकिन ये चेंजेस कमिट तब होंगे जब आप सेव करोगे.
ये चेंजेस कमिट कब होंगे, जब आप सेव करोगे। उसके पहले मैं एक छोटी सी चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, और फिलहाल मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इसको याद करो। ये एक्चुअली क्या है मैं आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पर एक चेकबॉक्स नजर आ रहा है, इसका नाम है ग्रांट एक्सेस यूजिंग हायरार्कीज। ग्रांट एक्सेस, इसके पहले कि मैं सेव करूं, एक छोटी सी बात मेरे से स्लिप होने वाली थी, इसलिए मैं इसको वापस ला रहा हूँ। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है जो मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ी सी अलग चीज है। ये मुझे थोड़ा सा पहले बताना चाहिए था, मैं स्लिप हो गया था, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि अभी आप सभी लोग यहाँ पे ध्यान से दें और सिर्फ जो सेंटेंस बोल रहा हूँ उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, ठीक है। देखिए, यहाँ पे एक चेकबॉक्स है जिसका नाम है ग्रांट एक्सेस यूजिंग हायरार्कीज। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है। ग्रांट एक्सेस यूजिंग हायरार्कीज, आप देख रहे हैं ये रीड ओनली है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कोई चेंजेस नहीं होगा। और ये कहाँ तक रीड ओनली है वो ध्यान से देखो, मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ उसको, ये कहाँ तक रीड ओनली है, ध्यान से देखिए, ये रीड ओनली है अप टू वर्क टाइप, ठीक है। और यहाँ से मेरा कस्टम ऑब्जेक्ट शुरू होता है, ऑथर, बुक, हायरिंग मैनेजर, लोन, माय कस्टम, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनो, एक असाइनमेंट आज दे रहा हूँ सभी को। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कैन वी चेंज, कैन वी चेंज, कैन वी एडिट, कैन वी मॉडिफाई। बात एक ही है, कैन वी चेंज, कैन वी एडिट, कैन वी मॉडिफाई grant access using hierarchies for the standard objects. Can we change, can we edit, can we modify or rather how to change the grant access using hierarchies for the standard object, for the standard, specifically for the standard. Why standard? Because see, there, what is the answer? What is the answer? Answer for this is, there is no way to change or edit the grant access using hierarchies for the standard object. It can be only edit. It can only be edit for the custom object. For the custom object, you could check, uncheck, check, uncheck. For the standard, you cannot do anything. For the standard, it is by default checked. For every standard object, it is checked. We cannot edit this. And here, yeah, answer tha, here I'm giving you one of the assignment for every one of you. What is the purpose of grant access using hierarchies? Go and Google this and submit the answers by tomorrow. ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रांट एक्सेस यूजिंग हायरार्कीज। ओके, दिस इज द, चलो ये एक अलग सी चीज है, इसका फिलहाल इसी से कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये यहाँ दिख रहा है इसलिए मुझे यहीं पर लेना था। तो वी कैन नॉट चेंज, वी कैन नॉट अनचेक, we cannot edit this checkbox of grant access using hierarchies for any of the standard object. What if I wanted to make any certain changes, I could make it only and only onto the custom objects. So these are our custom objects, and onto this only we could make any changes. I could check, uncheck, check, whatever I can do it only on the custom object. It cannot be done anything, we cannot do anything, on the standard objects. Fine, chalo. And I have given you this assignment. Go and Google this and try to find out what is the use of grant access using hierarchies. Anyways, okay, so I have made the changes in the OWD of account. I make it as private. It was initially public read only. I make it as to be the private. When I make these changes, the opportunity and the cases is also turned on to the private. And to commit this changes onto the database, let me first of all save this. It will ask me that it's going to take some time. It will ask me that it's going to take some time. I don't have any problem in this. Okay. I'm saving this. Okay, I'm saving this. So जब तक ये यहाँ पर warning message है, this actually indicates कि the changes is being committing to the metadata. Metadata में changes हो रहे हैं, तो थोड़ा सा रुकिए आप जब तक, एक 5-10 सेकेंड, and then refresh this. So now this warning has gone. That means the changes has been committed. You now see that the account is now having private OWD. The account is now having private OWD. And your opportunity and the cases also have the private. ठीक है, फिलहाल हमारा concentration, हमारा example use case जो है वो वैसे भी account पे है। तो अभी तक मैंने क्या किया, मैंने account object की OWD change की है private पे। फिर से क्लियर करिए, मैंने क्या किया है,
मैंने अकाउंट ऑब्जेक्ट की OWD चेंज की है प्राइवेट पे, ठीक है। मैंने फिर से रिपीट करता हूं, मैंने अकाउंट ऑब्जेक्ट की OWD चेंज की है प्राइवेट से, ठीक है। अकाउंट ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट? सिर्फ अकाउंट। अगर इसमें कोई चेंजेस आने वाले हैं तो सिर्फ अकाउंट में आने वाले हैं, हाँ, और साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी और केसेस में, बिकॉज वो साइमल्टेनियसली चेंज हो गए इसके साथ। लेकिन कॉन्टैक्ट, ऑर्डर, एसेट, कैंपेन, यूजर, इनमें कोई चेंजेस नहीं है। फिलहाल जो भी मैंने चेंज किया है दैट इज ओनली गोइंग टू बी गेट रिफ्लेक्टेड इनटू दिस ऑब्जेक्ट, अकाउंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ठीक है, चलो क्लियर है, आगे बढ़ता हूं। तो ये जो मैंने OWD पे चेंजेस किया, अब इसका इम्पैक्ट क्या है, आइए उसको समझते हैं। सो वंस अगेन आई रिफ्रेश दिस, आई गो टू द डेवलपमेंट यूजर, लॉग इन मारता हूं फिर से। डेवलपमेंट यूजर हैज क्रिएटेड अ रिकॉर्ड, वही स्टोरी फिर से रिपीट कर रहा हूं जो अभी 2 सेकंड पहले बताई थी। डेवलपमेंट यूजर ऑन द फ्राइडे ही क्रिएटेड अ रिकॉर्ड, द डिटेल्स ऑफ दिस रिकॉर्ड्स आर लाइक द नेम, development user record number one, with all these details. Development user created this record. This record is visible to him. Why? Because he's owner. Log out from here. This record is visible to the manager also. Okay, manager matlab hum log. I go to this development users record, I could see the record. Yes, this record is accessible to me. This record is accessible to me, right? I could see that I'm not the owner, but by the way, development user is the owner. ये भाई साहब है जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया, मैंने नहीं बनाया है, बट स्टिल दिस रिकॉर्ड इज विजिबल टू मी। व्हाई? बिकॉज आई एम हिज मैनेजर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दैट्स अ ग्रेट थिंग। नाउ वी नो apart from development user and this user, customer manager testing was also able to access this. अब चेक करते हैं, अब चेक करते हैं, बिकॉज आई हैव मेक सर्टन चेंजेस इन द अकाउंट OWD, आई मेक इट प्राइवेट। अब उसका इम्पैक्ट चेंज करते हैं। फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद द कस्टमर, बिकॉज कस्टमर इज होम, कस्टमर इज सबऑर्डिनेट। नहीं, 202 में कहां पहुंच गया मैं? हाँ, हु इज कस्टमर? कस्टमर इज बिलो टू C2, ही इज द सबऑर्डिनेट। चलो कस्टमर से ट्राई करता हूँ, कस्टमर यूजर पे लॉग इन करता हूँ। आई गो टू द अकाउंट, इसके पहले दिख रहा था, यू नोटिस दिस है ना। आई गो टू द अकाउंट, ठीक है, नो रिसेंट रिकॉर्ड, रादर ऑल अकाउंट्स भी क्लिक करता हूँ, नथिंग, नथिंग। मतलब वो जो रिकॉर्ड इसके पहले डेवलपमेंट यूजर का यहाँ पे नजर आ रहा था, दैट इज नाउ gone, rather not gone exactly, but this user customer is now, he's not able to access that record. This record is no more visible to this user, ठीक है। सबऑर्डिनेट है, ये सबऑर्डिनेट है, ये नीचे है, सबसे नीचे है, इसको नहीं दिख रहा है, ठीक है। ग्रेट, लेट्स लॉग आउट फ्रॉम हियर। नाउ बिकॉज कस्टमर वाज सबऑर्डिनेट, इसके नीचे था, इसको नहीं दिख रहा है। डेवलपमेंट यूजर ने जो रिकॉर्ड क्रिएट किया है वो कस्टमर को नहीं दिख रहा है, he was subordinate. Now let's check with the siblings. These two are the brothers, brothers of development user. They are siblings and they are enjoying the same priority. This having the same priority what a development user is have. Okay, now let's test it with the manager as testing. दोनों पे check मारता हूँ। Let me try to log in with the manager. अब मैं manager पे log in करता हूँ, manager पे log in करता हूँ। Let's go to the account. Recent में कुछ नहीं दिख रहा है, all accounts option select करके go करता हूँ। This user again doesn't have anything. That means the record is also now not visible to the manager. आप देख सकते हो, मैनेजर को भी नहीं दिख रहा है, श्योर हो गया। एक और है टेस्टिंग, टेस्टिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द सबऑर्डिनेट टू द डेवलपमेंट, इसको भी चेक कर लेता हूँ। लेट्स नाउ लॉग इन टू द टेस्टिंग यूजर। अकाउंट्स में जाता हूँ, अकाउंट्स में जाता हूँ, या रिसेंट में तो कुछ नहीं दिख रहा है, ऑल अकाउंट्स में जाता हूँ, इसको भी नहीं, ठीक है। नाउ दिस व्हाट वी हैव अचीव राइट नाउ। चलो यहाँ से लॉग आउट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अल्टीमेटली हमने क्या अचीव किया। अल्टीमेटली हमने क्या अचीव किया, देखिए मैंने अकाउंट की OWD प्राइवेट किया। इससे जो पहली चीज मैंने अचीव किया, द फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव अचीव्ड ओवर हियर, द फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव अचीव्ड ओवर हियर इज record visibility. Now the record which is created by this user development, now this record what we wanted, हम क्या चाहते थे, we wanted that the record if created by this user should be visible to him and to his manager.
Apart from these two people, no other should have the access. This is what we have achieved. आपने देखा अभी कि डेवलपमेंट यूजर का रिकॉर्ड जो कि पहले सभी को नजर आ रहा था, everyone was able to access now. Apart from these two person, one is the manager, the one is the owner of the record. Apart from these two people, no other have the access. बाकी के जो हमारे यूजर्स हैं उनको एक्सेस नहीं है, ठीक है. Your manager and the testing user doesn't have the access, and your customer user also doesn't have the access. So this is what we have achieved. First thing, record visibility. पहली चीज जो हमने आज अचीव की है वो है record visibility. By making OWD as to private, by making OWD as to be the private, what we have achieved, record visibility. Record visibility, ठीक है. एक चीज और हुई है जो हमारा कल से डिस्कशन स्टार्ट होने वाला है. See, when the object OWD has been assigned as private, किसी भी ऑब्जेक्ट की OWD अगर आप प्राइवेट करते हो, then upon creating a record by a user, any user, कोई भी यूजर अगर उस ऑब्जेक्ट में, जैसे अकाउंट की OWD मैंने चेंज किया, कॉन्टैक्ट की OWD मैंने चेंज किया, कैंपेन की OWD मैंने चेंज किया, तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में अगर कोई यूजर रिकॉर्ड बनाता है, अकाउंट में रिकॉर्ड बनाता है, कॉन्टैक्ट में रिकॉर्ड बनाता है, अपॉर्चुनिटी पे रिकॉर्ड बनाता है, कैंपेन पे रिकॉर्ड बनाता है, देखिए जिस पे चेंज किया है उसी की बात कर रहा हूं, तो दैट रिकॉर्ड इज गोइंग टू बी विजिबल ओनली टू द रिकॉर्ड ओनर. पहला ये शख्स है, एंड द सेकंड इज हिज मैनेजर, जो कि उसका मैनेजर. एंड अपार्ट फ्रॉम अदर देन दीज टू यूजर, नो अदर यूजर इन द ऑर्गेनाइजेशन विल बी एबल टू एक्सेस दिस. दिस इज समथिंग कॉल्ड एज रिकॉर्ड विजिबिलिटी, रिकॉर्ड एक्सेसिबिलिटी आपने कंट्रोल किया. अच्छा, एक चीज आखिरी और समझो आप, यहाँ पे मैंने अभी जो चेंजेस लाए हैं ना वो अकाउंट पे लाया हूं. इसका मतलब ये होता है कि अभी भी लीड, पब्लिक रीड राइट ट्रांसफर कॉन्टेक्ट जो भी है, मतलब अभी भी जैसे अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट पे रिकॉर्ड बनाएंगे तो वो अभी दूसरा अभी विजिबल है. यहाँ बात सिर्फ और सिर्फ अकाउंट की हो रही है. आपने अकाउंट की OWD चेंज की है प्राइवेट से, तो जिस ऑब्जेक्ट की OWD चेंज की है सिर्फ उसी की बात कर रहा हूँ मैं. अब वो ये है, आप समझदार हो ये समझने के लिए कि मैं इसकी अगर इसमें चेंज किया तो सिर्फ इसी की बात हो रही है, अगर मैं कॉन्टैक्ट में चेंज करूंगा तो कॉन्टैक्ट की बात हो रही है, बाकियों की बात नहीं हो रही है. राइट, ऐसा है ये कंसेप्ट. तो जो पहली चीज आपने अचीव की है आज वो है रिकॉर्ड विजिबिलिटी. अब आप सीना ठोक के बोल सकते हो कि अब डेवलपमेंट यूजर या कोई भी यूजर, सिर्फ डेवलपमेंट ही नहीं, यहाँ डेवलपमेंट यूजर की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ बात ऑब्जेक्ट की हो रही है. इनफैक्ट टेस्टिंग यूजर अगर अकाउंट में जाके एक रिकॉर्ड बनाएगा, और ये असाइनमेंट है आपको करके देखनी है, तो वो रिकॉर्ड सिर्फ टेस्टिंग और सीईओ को दिखेगा, ना तो वो रिकॉर्ड मैनेजर, ना डेवलपमेंट और ना कस्टमर. यहां तक कि कस्टमर यूजर अगर जो सबसे नीचे है हायरार्की में, ये भी अकाउंट रिकॉर्ड, अकाउंट ऑब्जेक्ट में जाकर एक रिकॉर्ड बनाएगा, तो वो सिर्फ उसको और सीईओ को दिखेगा, बाकी किसी को नहीं दिखेगा. ऐसा, तो ये आपको असाइनमेंट है, आपको करके देखना है. ये पहली चीज है. और एक और चीज हुई है यहाँ पे, वो सेकंड पॉइंट है शेयरिंग मैकेनिज्म. तो ये हम कल लेने वाले हैं, ठीक है. कल का हमारा स्टार्ट होने वाला है शेयरिंग मैकेनिज्म से. और प्लीज याद दिला दिया करो कि मैं कौन से टॉपिक पे हूँ, क्योंकि 4 4 बैचेस चलती हैं, भूल जाता हूँ. ठीक है, चलो. तो शेयरिंग मैकेनिज्म जो है यहाँ से स्टार्ट करूंगा मैं, कि फर्स्ट थिंग तो आपको आज समझ में आ गई. द फर्स्ट पॉइंट यू हैव बीन क्लियर. व्हाट इज द सेकंड थिंग दिस हैज हैपेंड व्हेन यू मेक OWD एज टू द प्राइवेट. व्हाट इज द सेकंड ऑब्जर्वेशन, सेकंड क्या इंपैक्ट होता है उस पर हम बात करेंगे. ठीक है, चलो. टुडे वी विल स्टॉप इट.